15,000 shares of rupees 1,000 each was issued, payable as 200 on application, 300 on allotment, 400 on first call, and remaining on final call. So 200, 300, 400 rupees on final call. 32,000 applications were received, for which 2,000 were rejected. Applicants of 2,000 were allotted 1,000 shares, and remaining applicants were allotted on pro rata basis. Okay, now we'll see how to do this. We have received 32,000 applications and application money is 200. So total application money received is 32,000 into 200, that is 64 lakhs. But out of this 64 lakhs, rejected and refunded are 2,000 into 200, that is 4 lakhs. Now this is 60 lakhs. Out of these remaining, 2,000 applicants were only given 1,000 shares. तो 2,000 के जो applicants है 200 रुपए वाले, 4 लाख जिनका एप्लीकेशन मनी है, उनको बस 1,000 रुपए 1,000 शेयर्स मिले 200 रुपए पे 2 लाख के, और बाकी के 2 लाख अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्टेड है. Okay, now this is 56,000, sorry, 56 lakhs. Now, out of 30,000 applicants, 2,000 applicants were rejected. So now remain 30,000. 30,000 मध्ये 2,000 applicants ला 1,000 shares मिळाले होते. So now remaining applicants are 28,000 and remaining shares are 14,000. देखो 32,000 applications थे, 2,000 reject हो गए, बचे 30, उसमें से 2,000 को 1,000 शेयर्स मिल गए, बचे 28. अब ये 28 को 14,000 शेयर्स मिलेंगे बचे हुए. Okay, so now this will be, they will get 14,000 shares and application money is 200, that will be 28 lakhs, and this will go to capital, and remaining 28 lakhs will be adjusted against allotment. So adjusted against allotment is 28 lakh and 2 lakh, 30 lakhs. Fine. Now let us see the entries. Bank account debit to equity share application account. You have received application for 32,000 shares. Total application money is 64 lakhs. Yes. Now it will be equity share application to equity share capital to equity share allotment to bank. Now see, out of these all applications, 2,000 applications we are rejecting. This 4 lakh will go to bank account. We are rejecting them. We are adjusting 1,000 shares, this 2 lakhs we are adjusting against allotment, and this 28 lakhs also we are adjusting against allotment. So it will go 30 lakhs. And in share capital we'll get 30 lakhs. क्या अभी तक सिर्फ application money है 15,000 into 200, 30 lakhs will go to share capital. Another 30 lakhs are going to allotment.
and bank account is 4 lakh. Is it? $28 lakh का शेयर ली, 14,000 shares है, 200 per share, 28 lakhs. But you have 56 lakhs. 28 lakhs capital को चला गया, 28 lakhs किधर गया? Allotment के against. See, what has happened is we have only issued 15,000 shares. We can only allot 15,000. But application received are for 32,000 shares. Out of which 2,000 shares are fully rejected. This 4 lakh will go. Now only 60,000 will remain. Now out of this 2,000 shares of rupees 200, 4 lakh, इनको हम लोगों ने 2,000 एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं? 1,000, 2 लाख रुपए अलॉट किए हैं, और इसके जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा. अब ये 4 लाख जाने के बाद 56 लाख बचता है. They have said remaining shares are allotted on pro rata basis. Now remaining shares are 28,000 applications, and allotment can only be done for 14,000 shares. 1,000 is already allocated. Only 14,000 are to be allotted, and applicants are 28,000. So now we'll again allot them on pro rata. So 28,000 applicants को 14,000 shares ही मिलेंगे. So 14,000 into 200, 28 lakhs will go to capital, and remaining 28 lakhs will go to allotment. Now this is done. Now we'll pass the entry for allotment. It is equity share allotment account. See, there are 15,000 shares. And allotment वरती किती due है? 300. So how many is total due on allotment? 45 lakhs. Right? To equity share capital. 45 lakhs. Now see, 45 lakhs is due, 30 lakhs we have already received. Now we will only receive 15 lakhs. बस ऊपर का ही मिलेगा हमको. तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 15 lakhs. Now the last one, first and oh no, not last, second last, final, first call due. First call due is 60 lakhs. Equity share, first call account, 60 lakhs to equity share capital, 15,000 into 400. So it is 60 lakhs are due. And you will receive entire money of 60 lakhs because now there are no adjustments. To equity share first call account. And now last, equity share final call account. Debit only 100 rupees. So it will be 15 lakhs. To equity share capital 15 lakhs. And you will receive it. Bank account to equity share final call
15 lakhs. झालं. This is your sum. अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं डाली है कि अगर ओरिजिनली शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हुए होंगे तो और प्रोरेटा अलॉटमेंट होगा तो करते हैं ना, वो तो आप लोगों को पता है ना कि जर्नल की टोटल करते हैं तो आप लोग करोगे टोटल उसकी. यू नो दैट यू टोटल द जर्नल एट द एंड. इसको आप यहाँ पे टोटल कर देते हो ना एंड में. आता आपला फोकस मेन याच्यावरती आहे शिकण्यावर. यू शुड डू द टोटल बट दॅट इज नॉट द फोकस ना. टोटल करायला पाहिजे. टेक्स्टबुक मध्ये पण त्यांनी टोटल नाही करून दिलेली आहे आणि ते याकरता नाही दिले कारण आता आपला फोकस हे नवीन गोष्टी शिकण्यावर जास्त आहे, या छोट्या छोट्या गोष्टींवर नाहीये. सो इवन इन एग्जाम इफ यू डोंट डू इट, इट डजंट मैटर. टोटल ना करने का और एक रीजन है, कंपनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हम लोग बस यही रिकॉर्ड कर रहे हैं. हाँ, पण आणि खूप सारे ट्रान्झॅक्शन असतात ना त्यांचे, आपण फक्त एवढेच करतोय त्याच्यामुळे आपल्याला फक्त एवढीच टोटल येणार आहे, पण ऍक्च्युअली कंपनीचे ट्रान्झॅक्शन खूप असतात म्हणून ते टोटल करणं नाही करणं आता काही फारसं त्याचा इम्पॉर्टन्स नाहीये. येस. Now in pro rata allotment, if the shares are issued at par, then we have already done such sums. If it is issued at discount, then discount is always charged at the time of allotment. लेकिन 2013 के बाद तो हम लोग शेयर डिस्काउंट पे इश्यू ही नहीं करते जनरली. लेकिन अगर शेयर्स प्रो रेटा पे अलॉट हो रहे हैं और प्रीमियम पे इश्यू हुए, तो whatever excess money that we have to adjust against allotment, will first adjust the premium and then the share capital. So let us say that 15,000 shares of rupees 10 each issued for rupees 12 each. Payable as three on application, 4 on allotment, including premium, five on first and final call. $25,000 applications. Sorry, I'll make it 27,000 applications were received, of which 2,000 were refunded applicants of 5,000 shares were fully allotted. Fully allotted means they have applied for 5,000, you have allotted them 5,000. Remaining allotted at on pro rata basis. Pass necessary journal entries. Now here it is very important that we do all the calculations very properly.
applications received were 27,000. ₹3 on 27,000. $81,000. 2,000 applications, 3 each, 6,000 is refunded. $75,000 remains. These are refunded. 5,000 shares are fully allotted. So this is 15,000. They are fully allotted. Remain 60,000 and 20,000 applications are remaining. Now these 20,000 applications, we have issued only 15,000. 5,000 are already allotted. Remain 10,000. तो अब इसको प्रोरेटा बेसिस पे हम लोग अलॉट कर रहे हैं. 20,000 एप्लीकेशन है, ₹3 के 60,000, लेकिन हम लोग अलॉटमेंट करेंगे बस 10,000 शेयर्स का ₹3 पे 30,000. 30,000 ये जो रिमेन करेगा, इसे एक्चुअली तो हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अलॉटमेंट में ₹2 कैपिटल का है और ₹2 प्रीमियम का है. तो 10,000 शेयर्स पे ₹2 प्रीमियम कितना आएगा? 20,000. ये हम लोग प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे पहले, और बचे हुए 10,000 जो है वो आप कैपिटल को ट्रांसफर एडजस्ट करोगे. So what happens here is whatever the excess money remains, वो जो अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने हैं, उसमें से 20,000 हम लोग प्रीमियम के पहले एडजस्ट कर लेंगे. Then the remaining 10,000 will adjust. देखो अलॉटमेंट पे कैसे ड्यू रहेगा. अलॉटमेंट ड्यू विल बी 10,000 for each, 40,000, out of which 10,000 into 2 each, 20,000 is your premium, and 10,000 into 2 each, 20,000 is your capital. अलॉटमेंट ₹4 का है, ₹2 प्रीमियम है, ₹2 कैपिटल है. तो ये जो 30,000 एक्सेस है, उसमें से पहले ये 20,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे प्रीमियम के, फिर ये 10,000 रुपए कैपिटल में एडजस्ट होंगे. तो टोटल आपके पास 40,000 ड्यू है अलॉटमेंट पे. 30,000 will be adjusted, but out of that 20,000 is adjusted for premium, 10,000 is adjusted for capital, and only 10,000 people will bring in. So the entries here will be: first, application received. So entry is bank account debit to equity share application account, and that is we have received complete 81,000 here. Out of that, we are going to refund 2,000 shares, so 6,000 are going to be refunded. 5,000 shares are going to be fully allotted, and remaining are allotted on pro rata basis. So it will be equity share application account 81,000 to bank account 6,000 to equity share capital account. तो अभी कैपिटल में तो सिर्फ 15,000 शेयर्स ही जाएंगे, और एप्लीकेशन मनी ₹2 का है, सॉरी ₹3 का, तो only 45,000 rupees will go. See, this 30,000 of 10,000 shares which are allotted on pro rata, and this 15,000 of 5,000 shares who are allotted fully, this 45,000 will only go in share capital. And 2
equity share allotment, 30,000 will go. So this is 75 plus 6. Now see here, you have received application for 25,000 shares. Sorry, 27,000. You have refunded 2,000. Now only 25,000 remains. Out of that, see, I'll do it like this. Application received is for 27,000. We have to allot only 15,000. Rejected is 2,000 shares, so 25,000 remains. We have to allot only 15,000, out of which 5,000 are fully allotted. Now 20,000 applications remain, and we have to allot only 10,000. 20,000 application को 3 रुपए पर शेयर मिला है, तो 60,000 एप्लीकेशन मनी मिला है, लेकिन एप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा सिर्फ 30,000. तो ये जो डिफरेंस है ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो हम लोग इधर अलॉटमेंट में वो 30,000 डाल दिया. ओके, नाउ अलॉटमेंट विल बी ड्यू. इक्विटी शेयर allotment account debit, it is 15,000 share into 4. 60,000 is the due to equity share capital. 15,000 into 2, 30,000 is capital, and remaining 30,000 is share premium. Okay, now 60,000 is due on allotment. We have already received 30,000. Sorry, how much is due in on allotment? It is only 40,000, not 60. Sorry, it's not 60. It is only 40,000 because it is 15,000. अलॉटमेंट में आपको ड्यू है 15,000 into 4, that is 60,000. उसमें से 2 रुपया कैपिटल का है 30,000 और 2 रुपया है प्रीमियम का 30,000. अब हमारे ये जो 5,000 शेयर्स है जिनको हम लोगों ने फुल्ली अलॉट किया है, ये तो 4 रुपया ही लेके आएंगे. तो एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. ये जो 5,000 शेयर होल्डर्स है जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ है, वो 5,000 into 4, ये लोग कितना लेके आएंगे? 20,000 ये लोग लेके आएंगे पूरा. ओके, और जिनको प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है उनका क्या है? उनका तो 40,000 ड्यू है, उसमें से 30,000 एडजस्टेड है, तो वो लोग बस 10,000 ही लेके आएंगे. सी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? 60,000. एडजस्टेड कितना है? 30,000. तो बैंक से कितना आएगा? 30,000. दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि जो एक्सेस है उसमें से पहले प्रीमियम निकलता है, वो एंट्री में कहीं नहीं दिखेगा. और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि जब हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे तब ये चीज काम में आएगी. आर वी गेटिंग दिस? सो नाउ शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू था 60, 30 एडजस्ट हुए हैं, 30 मिल गए. नाउ नेक्स्ट फाइनल कॉल. Equity share final call. Now here there is nothing to adjust. 15,000 share, 5 rupees per share, 75,000 is due to equity share capital.
75,000 is due. And you will receive 75,000. Is that okay? So this is an adjustment that you should know how it works. आप यहां से भी निकाल सकते हैं. देखो आपको मिले 27,000 एप्लीकेशन, 3 रुपए था एप्लीकेशन पे, 81,000 you received. Out of that 2,000 shares you have rejected and refunded, so 6,000 is refunded. A total allotment is only for 15,000 share. 15,000 into 3, 45,000 is allotted, and remaining 30,000 is adjusted against allotment. Now allotment पे due था 60,000, 30,000 ऑलरेडी मिल गया है, तो सिर्फ 30,000 ही आएगा. और ये जो 60,000 है, इसमें से 30,000 कैपिटल है, 30,000 प्रीमियम है. नाउ फाइनल कॉल 75,000 ड्यू है, 75,000 रिसीव हो गया. और मैंने जो ये बोला, ये 5,000 शेयर होल्डर को अपने पैसे लेके आने पड़ेंगे क्योंकि उनको फुल अलॉटमेंट हुआ है. और वो जो 10,000 शेयर होल्डर है जिनको प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, उनका थोड़ा पैसा एडजस्ट होगा और थोड़ा पैसा वो लोग लेके आएंगे. This is for your understanding, because whenever we are doing forfeiture, then we'll have to consider all these points. Okay.